No. Okay, so let me share my screen. Let me know right once my screen is shared. My Yeah, screen. visible. Perfect. Okay, great. So now say the the way, right, you can say the deployment, management of application, right, had moved from, right, monolithic era, right. When I say monolithic era, right, of, right, application, what you feel, what is a monolithic era, what kind of, right, application structuring or packaging, or, right, in case of deployment, was happening at that era? Anyone? So in monolithic era, suppose if there is a one server, Mm-hmm. so it contains all the things like storage, RAM, CPU, database. So all the things will be there. Mm-hmm. So basically, for example, I have my, right, application that need to be used by user. So what I did, I am creating, right, an instance, and for to run that application, whatever entities, right, is required, I am, right, putting them in, right, that instance. Correct. So maybe what you said, right, storage, right, whatever application, right, which needs to be executed, database, right, everything is here, and as engineer who is working, right, is, right, deploying them in, right, certain environments, right, and then, right, a user, right, which is the other side, right, using, obviously they will also use, right, load balancer, because there would be a lot of such instances out there, right, using that, they are basically uh, enjoying the services, right. Okay. And see, I need this kind of, right, copy, right, to scale. If I want, right, I need to scale, then I to do what, horizontal scaling, and I need to create a lot of this, right, instances, and user would be, right, basically, right, using, right, all the services using load balancer, it will be rotating around them. So this is what, right, in earlier days we were doing. In a way, right, we are actually managing our servers and, right, applications running in that particular server. Correct. Yes. Now what, uh, in a sense, right, what could be the challenge, or what are the, right, cons in such setup? We had discussed one, right, when we learn about OS virtualization, right, in terms of what, resource optimum utilization, which is very visible, right, in this cases. Though you are, right, acquiring instance of, right, a server class, but you are running, right, some, right, some application which are not consuming that much of memory, and your instance, right, have, right, that much of memory. In a way, you are losing out, or you are not optimally, right, utilizing your resources. True. Yes. Now, what happened, right, recently, right, we thought of, right, why, right, to have this, right, applications, right, within a single, right, instance as a part of network, they are also communicating. That is good, right, in terms of all those communication, that is good. But in terms of, right, development, it actually creates a problem, right, in managing a workload, right, or because if I want this service to be, right, only scaled, right, basically vertically scaled, I don't want, right, these databases to be, so where I can place them, this kind of challenges were also there, right. I don't want to scale our database, I just want to, right, have my application, right, vertically or horizontally, right, uh, get scaled. So how I will do that? So what actually, right, help in the, in these terms, right, basically segregating out of, right, them, in what we do in basically in monolithic, right, application development. So they want what, they want to, right, create separate model out of it, and they can run independently, right, rather than being, right, to be run in a same, right, right, packaged, or you can say, right, application environment. So this want to be, right, broken down, and then what happened? So
they are just pulling this out, this module, say for example in this application, and using right this run times, right, container run times like CRIO, Docker, right, and many other which are coming RKT, right. They started right basically containerizing this application separately and managing them separately. Okay. So you created right this, and say for example many more as per your requirement you had segregated and you created all this right containers. Now these containers would be horizontally and right vertically scaled. When they are horizontally scaled, there would be n numbers of right these containers that right need to be created as per your scaling for the user, right. So obviously they get a lot of right uh, in terms of performance, right, in terms of availability, in terms of portability. So various aspects right need to be taken care for right each of these containers. Okay. Similarly, this why what happened, I'm selecting this. Now see, now if the number of containers are growing, then what you will try to right do, you have to manage them, yes or no, Yes. properly. So uh, if it is about only 2 or 3 containers in my production workload, I can manage them, right, just like what I was managing in monolithic, right. I will manage my server which is running my workload. But if you have cluster of instances running independently, all this containerization, somewhere there is a need of right in terms of making them highly available, right, and monitoring whether right this containers are in a good state or not. We need right something called what, container management platform. Now container management platform, the base concept right was what, I have my infrastructure. Okay, I have my infrastructure, some data center, right, like AWS, which is providing you, or you can go to the on-prem, right, lease a data right data center in which you will be right having your infrastructure, right, in terms of network and hardware, right, and using that you will be creating right clusters. These clusters are of what, these clusters, for example, say they're cluster of instances. And this cluster, in this cluster of instances, right, to make your right service available to right customer, you need to right deploy right containers, right, with your workloads. So in each node, you will be basically right placing such containers, right. So in this container, right, you will be doing what? You will be right deploying your right application or module, right, and your workloads would be right orchestrated here in this right clusters, and they would be right correct providing the service. But how you will be doing that deployment, right, where this container should be placed, right, because it is right cluster of nodes, right, and basically as per right the cluster definition, right, there would be right uh, worker nodes, there would be someone which is managing right them. So I need certain kind of right architecture where I should be possibly defining, so I am aware of right these are the nodes I have with me. Maybe I have 2 node cluster, I have 5 node cluster, I have 6 node cluster, right, and as per the cluster your applications are running there, and you want to do deployment in those set of cluster. So over this cluster I need another layer
which I call what? Customer container management platform. So container management platform should what capability should have? It should know, right, what cluster it is part of, right, and it should able to, right, do whatever, right, end user, right, wants to do. So end user will always try to do certain action, maybe deployment, some service check. So obviously, right, gather some data about what is happening, how my service is running. So if I need to do, right, rolling updates in my, right, application or module, right, which is a containerized. So this actor will not directly jump into, right, a node or container and do the changes there. So it will say, right, hey, container management platform, since you are aware of, right, where my container is running, right, I'm sending you a request, read my request, and, right, process them, and, right, do the activity for me, right, so that all the changes should be placed, and, right, all the changes which I want to do, right, for end user should be there. And in that way, right, what will happen, container management platform is built in such a way that it has an awareness, right, about what service running where, right, it is managing, right, in this container management platform. So that awareness is there. As per that awareness, right, it will able to reach the proper containers, right, in which the change or any deployment need to be done, right, it will do. It will schedule if it is a fresh deployment, right, if it is a change, right, it will, right, do the changes. So all these thing is there. Even, right, it will manage the replication of the container. If I want my workload should be replicated to 3 instances, right, mainly reason behind a, right, of replication could be a high availability, right, or you can say a self-healing capability. So if I am replicating, and I say I need a three, right, replica of, say, my, right, whatever deployment that I have done. So obviously, a container management platform will always try to manage the desired state. Now, if say I had a replication 3, but I see only 2, right, such workloads are available, one is not there. So obviously, container management platform understands, okay, it is something bad with, so it will destroy it and recreate one, right, so that the desired state is maintained. In that term, self-healing capability also comes in. So what it is doing, it is actually trying to make the portability or deployment easy. Second, right, maintenance of your deployment also easy. Third, the portability in terms of, right, deployment, you are doing deployment as a code. Fourth, right, I would say security wise also, right, container management platform will take care, because it all the communication happens over TLS, which is a highly secured. And already I have talked about high availability, right? So these all are the main factor, right, where container management platforms come in picture when you are dealing with microservices application architecture, where your workloads are independent of each other. And then comes various other aspects that we will now talk about. First of all, the concept regarding container management platform is clear or not? Hello everyone. Yeah, yes, Deepak. Okay, now how it will be done, and right, how Kubernetes do it. This is, right, important. So Kubernetes is one of the container management platform, right, and there would be many coming up. So Kubernetes much popular. It is an open source, right, container management platform. As for your trivia, right, it has been developed by whom? किसने बनाया Kubernetes? किसका बेबी Microsoft, प्रोडक्ट है? No, not Microsoft, Microsoft. Google. Google. No, Yes, it is yeah. Google. Okay. गूगल का नाम कैसे पड़ा? What is Google? जिनको नंबर में No, इंटरेस्ट है ना, प्लीज गो एंड सी, राइट. Basically it is specific number system coined by a 7 or 8 years kid, right. Basically, how many zeros after one, right, and as per that there is something called Googol, Google, and then Googleplex, and from that, right, Google take it name, right, for their search engine. So let's come out of it.
mainly, right, it is a baby product of Google was already in this, right, exercise from many years, because their workloads even running, right, and in the system that they had created, right, the platform that they have created is already containerized, and their application management happens from that system. And since Docker, who is inventor in a way of or democratizing container, has a very good opportunity to do that, but they didn't thought about it. And Kubernetes came from Google, and it uses, right, runtime, and like Docker as a runtime. But in a later, if you see, right, recently 6 months back, there was a news that Kubernetes will be deprecating, right, Docker as their, right, default runtime. So they will be using some other CRIO or some other, right, containers, but still, since it's a popular, still, right, the support would not be there, but Docker is going to be there with, right, as a runtime for Kubernetes. Now the main right thing, right, you have to understand in terms of, right, master slave nature of its this architecture of this Kubernetes. So what happens, for example? Sorry for the interruption. Just one question. Yes, Rajiv, go ahead. The Kubernetes जो है platform as a service, right? Yes, it is a platform as a service. तो अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो There is something called Docker platform, right, which, right, is not that popular, and still, right, in phase of, right, coming up. ओके और अगर जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और अगर ऐसी कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मतलब देखो शायद मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि कुछ नहीं नहीं मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर डेटा सकता. डॉग्स Software as a Datadog is, right, software as a service, but it is not a platform. ओके ओके You got my platform can provide software as a service over it. हाँ समझो, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डाल सकते हो ना, और यूज करेंगे यूजर सॉफ्टवेयर को. हाँ हाँ? मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें, राइट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके आपका अकाउंट करना है, और आप वहाँ पे एक सिस्टम लेके अपना डेवलपमेंट करके अपना सॉफ्टवेयर डाल दो. तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो अपने प्लेटफॉर्म पे एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और अब उस सॉफ्टवेयर को पब्लिक रखते हो और लोग यूज कर सके. तो इन अ वे ऑफ क्लाउड, राइट, इट बिकम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. People are using it now, right, using that platform. Similarly, मैंने Kubernetes के platform पे, right, आपको दे दिया सब कुछ, right, now you are installing, right, your search engine over it. ठीक है, using Kubernetes, right, and obviously the Google search engine would be what, as a software as a service, right, for the users, correct? yes Okay, now the entire thought process is like this first, right, at a very right, broader overview first. So say this is my infrastructure, okay, and in this infrastructure I have, right, created a cluster of, right, 4 or 5 nodes. So I have 5 nodes here. Why I'm designing, like, मैंने एक को ग्रुप कर दिया, एक को अलग कर दिया. वैसे था तो ये ऐसे ही क्लस्टर है 5 नोड्स का, बट मैंने इसमें से एक नोड लिया और उसको बोला यू आर मास्टर. ओके, सो जो ये मैंने नोड मास्टर बनाया, मास्टर इसलिए बनाया क्योंकि दिस शुड बी एबल टू, राइट, डू व्हाट, इंटरेक्शन विथ all those, outside of right, workers. Okay, इसमें दैट मींस हम मास्टर नोड बोलते हैं राइट सर मतलब yes, उसमें इंस्टेंस it is an instance, right, it could be itself a container, right, itself a यस virtual machine, right, the way you will use, but generally, right, it should be uh, virtual machine or a bare metal machine, right, it would be good to have, right, that master, right. If you're using, right, a containered way of doing, you can do that also, there is no limitation. Okay, so obviously we have, my bad, right here, workers. तो ये वर्कर का क्या क्लस्टर है, ये सारे वर्कर्स हैं, सॉरी सॉरी रॉन्ग फ्रेज, वर्कर का क्लस्टर नहीं, ये एक क्लस्टर है मशीन्स का, उसमें मैंने एक मशीन उठा के इसको मास्टर में ब्लेस कर दिया, सो दैट ही विल बी एबल टू, राइट, इंटरेक्ट विद ऑल दोस वर्कर्स. नाउ
this master, why I need this master? So master, right, should have capability, right, to know all these nodes, and if any workloads need to be right pushed, so master should be able to communicate those workers and right push the workloads right properly in those workers. Now this master node, right, itself need that capability right to work with workers. For that, right, there are certain utilities, or you can say components, right, or you can say certain modules which need to be placed in the master to make it a master. Okay, तो ये क्या है? अभी आई एम जस्ट elaborating you master. तो हम मास्टर को अब थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि, तो ये अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मास्टर कंपोनेंट का डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है? माय बैड. Okay, now first of all, in master there are few important components that you should be aware of. There is one very important component called what? Kube API server or API server. So this, sir, this is a process or a specific server? These are actually module, right, or software component written, right, and placed. जैसे आप क्या क्या बोलूँ मैं आपको, जैसे अगर मुझे जेंकिंस मास्टर स्लेव देख लो, तो जेंकिंस का एक सर्वर डालना पड़ता है ना नोड पे, करेक्ट? हाँ, yeah. तो वैसे ये भी एक तरह का राइट यूटिलिटी, एक मॉड्यूल है, कंपोनेंट है, राइट, जो कि वी हैव टू राइट इंस्टॉल इन दिस मास्टर मशीन. ओके, तो वो मतलब जब मैनेज जब करने आप के लिए हाँ जरूरत हाँ जब आप Kubernetes इंस्टॉल करते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको सर्वर पे ये डालना पड़ेगा या इनेबल करना पड़ेगा. In general practice, right, if you want to do setup, right, this in your local machine, first of all it would not be that easy, right? Very straightforward and right, very honest, because it depends upon so many things in your right laptop. सबसे पहले तो आपका जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए. क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? रैम ज़्यादा होना चाहिए. एनी रीजन, कैन एनीवन टेल मी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रैम ज़्यादा होना चाहिए? इसका इसका ये मास्टर का नहीं, मास्टर की नहीं, आप सोचो आपको कुबरनेटिस कंटेनर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आपके लैपटॉप में हाँ, सेटअप करना है. उसमें ऑब्वियसली मास्टर नोड होगा, राइट, वर्कर नोड भी होंगे, करेक्ट? वो सब बनाना पड़ेगा ना. यस यस. तो उसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है आपका राइट लैपटॉप में, वो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तो रिच करना पड़ेगा, है ना? तो ऑब्वियसली 6 GB एंड मोर रैम वुड बी रिक्वायर्ड. रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज यू विल बी क्रिएटिंग राइट क्लस्टर ऑफ नोड्स है. तो आप डॉट्स, अपने यस. सिस्टम पे आपको क्या एक वर्चुअल बॉक्स लाना पड़ेगा या राइट, कुछ इस तरह का वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट डालना पड़ेगा, जिससे आपको मशीन बनाने पड़ेंगे, क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, राइट? उसमें से एक क्लस्टर पे आप क्या करोगे, क्लस्टर के एक नोड पे आप क्या करोगे, एक क्यूब एपीआई सर्वर डालोगे. तो ऑब्वियसली आप अगर गेस्ट ओएस ज्यादा बनाओगे तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम पे रैम यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और फिर उसके ऊपर अगर आप वर्कलोड डालोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? So we can do setup. There are ways. I have a document also. You can try. And second thing, your BIOS, in your BIOS set, your virtualization should be enabled. So virtualization support, right, in your laptop should be enabled. And these are a lot of challenges. So therefore, I will not let you. If you want, I can give you that document that I have done right in my laptop, and it was successfully done. So all the steps are mentioned in terms of right doing a local setup, but we will be doing our labs in right a playground called Katacoda, right, Kubernetes playground, which will give you same feeling of right launching, right, and right setting up Kubernetes, and then right running our examples, right, in which we have to learn many other things, right, from beginner level to at least right at some higher level, in which we will have a very good network right understanding also in Kubernetes. Okay, so that's what I am saying. But you have to see this Kube API server is nothing but what, one of the important component. Why it is an important component, I will talk to you. Now Kube API server is there, then right basically this Kube API server, right, will be getting right some request from what, user. जो हम बात कर रहे थे ना कि मुझे डिप्लॉयमेंट
करना है, मुझे सर्विस ऑर्केस्ट्रेट करना है, मुझे रेप्लिकेशन वे ऑफ डिप्लॉयमेंट करना है, मुझे इनग्रेस करना है। तो ये जो चीजें हैं ये यूजर राइट आइदर यूजिंग graphical user interface or command line, right? Let me take this user here. ये जिस करने में टाइम निकल जाता है। हाँ, तो ये कमांड लाइन या GUI इंटरफेस के थ्रू राइट यूजर क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है मास्टर के साथ। एंड जनरली यू विल सी राइट वी विल टॉक अबाउट kubectl इज व्हाट कमांड लाइन यूटिलिटी, जैसे डॉकर कमांड है वैसे क्या है kubectl। kubectl कमांड्स हैं राइट। तो आप जिस जगह से आपको इंटरेक्ट करना है मास्टर सर्वर के साथ जब kubectl कमांड्स के थ्रू राइट चेक इंस्टॉल सब कुछ कर सकते हो। और आपका जो डिप्लॉयमेंट है राइट कैन बी डन यूजिंग अ वेरी बेसिक यूनिट राइट ऑफ कम्युनिकेशन which is nothing but YAML or a JSON file which we call what pod. So pod क्या है, लॉजिकल यूनिट है। और ये लॉजिकल यूनिट क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, all the labeling and specifications required for right doing a deployment, doing an ingress, doing right a service action. So all this information right if I provide in my kubectl request right to the API server, I generally call it what a pod. So pod is a logical unit which contains which image you want right to right run your application, what should be the name of your application, right? How your application should be accessed, what should be basically right you can say the replication of your application, how many instance of your application you want to run. And then it could be right if you want to make it as a service right your application, so what kind of access should be there, it should be accessed through a load balancer or directly using a node port. So all this information right we generally define where in this pod. So pod is a area is something you can treat it like what Ansible ka playbook right, uh, Terraform ka config file right, or Jenkins ka ये Jenkins file, Docker का Docker file. You can compare with this, right? It contains what a declaration, that what you want, right? We place in this pod, and when you have defined this pod or what you want, basically this request goes as an API call, right? When you run right using kubectl apply create whatever command that we will see, this API request right goes to what this API server. So API server is going to read the information that you have passed and basically stores in a right cache database, right, a NoSQL database, popularly known as what etcd, which is developed by which company, Core OS. Okay, so obviously API server would be right parsing your request and keeping right for processing purpose right with itself so that it can communicate right or do something whatever you want right. So maybe right deployment है तो HCD के पास वो सारा parse होके information database में write हो गया. Now there are two more components. मीन्स ये जो पोर्ट्स आपने बताया वो इट एक्ट्स एज अ सर्विस फॉर डेमन राइट? No, pods basically is a logical entity. It has its own namespace. Basically just like जैसे container को एक IP मिलता है ना. हाँ जब आप ये पॉड को जब इंफॉर्मेशन के वे में जब पास कर रहे हो तो जब ये पॉड डिप्लॉय होगा, ये जब पॉड प्लेस होगा वर्कर में, तो ये पॉड एक एज अ लॉजिकल यूनिट जिसके अंदर क्या रन हो रहा होगा, कंटेनर रन हो रहा होगा, है ना. जिसके अंदर क्या है, कंटेनर इन्फॉर्मेशन है. पॉड में मैंने बोला है कि मेरा एप्लीकेशन इस कंटेनर में रन होना चाहिए. तो पॉड का अपना एक इंफॉर्मेशन है, पॉड का अपना एक नेम स्पेस है राइट. उसके अंदर कंटेनर है, कंटेनर का अपना नेटवर्क और नेम स्पेस है. तो पॉड एक लॉजिकल यूनिट है जिसने बोला है आइदर राइट आई विल हैव वन कंटेनर इनसाइड मी और आइदर आई हैव टू कंटेनर्स फॉर रनिंग राइट वर्कफ्लो फॉर मी. सो यू कैन थिंक समथिंग लाइक दिस. ये मेरा पॉड 1 है. इस पॉड 1 को जब मैंने लिखा है तो एक फाइल में लिखा है पहले, बट जब ये डिप्लॉय होगा
तो ये पॉड 1 है। इसके अंदर मैंने पॉड 1 के डेफिनेशन में दिया था आई नीड वन पाइथन कंटेनर से फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, कंटेनर, इसके अंदर पाइथन, सो एप्लीकेशन कंटेनर है तो पाइथन है, पाइथन ऐप कंटेनर है, ठीक है। और फिर इसमें मैंने इसी पॉड 1 पे मैंने एक और राइट कंट्रोल सेट करना पड़ेगा, ये उसके साथ बाइंड हो रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर भी डाला है पॉड के अंदर। मेरे पॉड के अंदर 2 कंटेनर है, ठीक है। अभी इसमें है मेरा एक, मान लो एक रेडिस कंटेनर, ये मेरा पॉड 1 है, ठीक है। मेरा एक और पॉड है, मैंने एक और पॉड बनाया और इस पॉड में मेरा सिर्फ एक ही कंटेनर है, मान लो एक वेब सर्वर कंटेनर है, ठीक है। तो ये मेरा पॉड 2 है और ये मेरा अपना एक इसमें कंटेनर है वेब सर्वर। अभी जब मुझे अगर डिप्लॉय करना है, मान लो पॉड 1 डिप्लॉय करना है और पॉड 1 मेरे को चाहिए राइट एज अ एप्लीकेशन ऑफ 3, राइट, मुझे इस तरीके, तो मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, राइट। उस फाइल को मैंने बोला मेरा pod.yml और राइट मेरा deployment.yml वट एवर नाम दिया, राइट, एप्लीकेशन deployment.yml। और उसके अंदर मैंने डिफाइन किया कि आई नीड इमेज फॉर राइट लॉन्चिंग अ कंटेनर विच शुड बी अ पाइथन इमेज एंड आई नीड राइट कंटेनर राइट विथ हैविंग रेडिस। तो अभी जो मैंने कंटेनर बनाया उसके अंदर मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन है, राइट। जो कंटेनर मैंने बना के रखा, मैं उस इमेज को लाके मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो एग्जिस्टिंग कहीं से वो पुल करेगा, है ना, जैसे हम लोग ने डॉकर में देखा। बस मैंने इमेज इमेज सोर्स दिया अपने पॉड में, जब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ इमेज नेम दिया है और ये 2 इमेज नेम दिए मैंने और अपने इसको एप्लीकेशन को नेम दे दिया और मैं इसको जैसे लेबल कर दिया मैंने, सॉरी माय बैड, आई शुड यूज टेक्स्ट था, तो मैंने इसको एक लेबल दे दिया ऐप 1, ठीक है। तो जब भी मैं राइट ऐप 1 को स्टार्ट करना चाहूंगा, ये तो मेरा डिप्लॉयमेंट पॉड है, राइट, कि मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मैंने लेबल ऐप 1 दिया और इसके स्पेसिफिकेशंस हो गए कि कौन सा इमेज चाहिए, क्या चाहिए, ये सब मैंने डिफाइन किया फाइल में। जब मैं ऐप 1 बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली जब भी कोई इस एप्लीकेशन को रिफर करेगा, किस लेबल से रिफर करेगा, ऐप 1 से रिफर करेगा कि ऐप 1 को राइट क्या ऐप 1 का पॉड कौन सा है, राइट, ऐप 1 का कितने इंस्टेंस रन हो रहे हैं। पॉड तो ये पूरा का पूरा लॉजिकल यूनिट है और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, उस पॉड 1 का नाम क्या दे दिया, लेबल करके ऐप 1 दे दिया। अब जब मैं बोलूंगा कि मतलब एज अ यूजर मैं बोलूंगा कि मेरे को ये पॉड एज अ 3 इंस्टेंसेस चाहिए, तो ये क्यूब एपीआई सर्वर विद whatever component I'm going to talk about will actually deploy this pod in what this workers। तो वर्कर में इधर वो तीनों इंस्टेंस एक वर्कर में ही डाल सकता है, क्योंकि अगर उसके पास है इतना रिसोर्सेज है तो ये तीनों पॉड इस वर्कर में डाल सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, मुझे वर्कअप पे थोड़ा लेट आना था बट सिंस योर क्वेश्चन हैज कम आई नीड टू राइट डिस्क्राइब दैट सो दैट क्लैरिटी शुड बी देयर कि ये पॉड है क्या, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ये जो पॉड था, मैंने ये बोला ये वाला पॉड, ये मैंने एज अ फाइल इंफॉर्मेशन डाला है। जब डिप्लॉयमेंट होगा तो ये जो सेट, ये जो पॉड है इसके अंदर के सारे चीजें, ठीक है, उठा के ये मेरा वर्कर नोड है यहाँ पे डाला। अभी मैंने अपने रिक्वेस्ट में बोला कि मुझे इस पॉड का 3 रेप्लिका चाहिए, तो आई विल हैव 3 instances, 3 instances of this pod placed in this worker node, right? Or right, it can be distributed right among the cluster of workers। तो ये क्या है, इस तीनों जो ऐप 1 के 3 इंस्टेंसेस क्या है मेरे इस वर्कर नोड पे चल रहे हैं एंड एपीआई सर्वर इज अवेयर राइट थ्रू इट्स कम्युनिकेशन थ्रू राइट इट्स बेसिकली कंट्रोल प्लेन और कंट्रोलर इज चेकिंग ऑन दिस ऑल 3 कि ये पॉड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है और इन पॉड के अंदर जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो एपीआई सर्वर के पास इंफॉर्मेशन रहता है क्योंकि उसने स्टोर किया हुआ है इसका लेबलिंग राइट स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। तो उस वे से राइट इट इज एबल टू राइट चेक इफ इट इज राइट इन गुड स्टेट और नॉट। तो इस तरीके से मेरा ये 3 जो पॉड है वो डिफाइन हुआ। अब ऑब्वियसली ये जो पॉड है, एक पॉड एक लॉजिकल एंटिटी है बट उसका अपना एक नेम स्पेस है जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि ये पॉड है और इस पॉड के अंदर मेरे 2 कंटेनर रन चले। सिमिलरली मैं सेकंड टाइम एक और रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ
राइट, पॉड 2 का, कि ऑब्वियसली आई नीड टू इंस्टॉल वन वेब सर्वर, राइट, दिस पॉड विद अ सिंगल इंस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये पॉड अगर जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो ये भी डिप्लॉय होगा। अगर इसी वर्कर में स्पेस है तो ये इस वर्कर में भी रह सकता है, राइट। और इसका सेपरेशन क्या हो गया, वो लेबल F1 है, ये होता है लेबल F2 करके पोर्ट 2 डालूं तो ऑब्वियसली ये पॉड का जो एंटिटी नेम स्पेस है वो F2 से आइडेंटिफाइड है, और इसके अंदर क्या चल रहा है, एक वेब सर्वर कंटेनर चल रहा है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट बेसिकली पॉड इज, यस Yes. यस यस। राइट। सो यू हैव टू थिंक राइट इन दैट वे। तो आप कहीं पे एक डिक्लेरेशन दे रहे हो, वो डिक्लेरेशन के बेसिस पे, राइट, वो लॉजिकल यूनिट कहाँ पे जा रहा है, वर्कर्स में जा रहा है, जो कि इस मास्टर नोड के साथ अटैच्ड है, ठीक है। एक जो आपने बताया एट सी एट सी डी, हाँ। हाँ, इसमें सर किसका इन्फॉर्मेशन या मेटा डेटा रहता है, कंटेनर हाँ, का या पॉड? पूरा पॉड का जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, लेट मी शो यू राइट अ पॉड एग्जांपल। सो पॉड कुड बी इन अ फाइल बेस्ड, राइट। पॉड YAML एग्जांपल में लिख देता हूँ आपको, सो यू कैन राइट नाउ विजुअलाइज। मेरे पास फाइल है ऑलरेडी मेरे, बट आपको मैं एक YAML फाइल, सैंपल YAML फाइल दिखाना चाहता हूँ। ये मास्टर का क्यों दिखा रहा है? I don't want to show you pod kind, right? But you can similarly, right, identify. ये आपका API है, right? एक API रिक्वेस्ट है, ये एक फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर kind pod है। सिमिलरली kind डिप्लॉयमेंट हो सकता है, kind सर्विस हो सकता है, kind रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो सकता है, kind ingress हो सकता है, ठीक है। So there are several kind of right kind. When kind is deployment, basically whatever you have written here, right, basically there would be something called container, हाँ, specs। तो specs के जो containers है वो क्या होगा, वो actually deploy होगा कहाँ पे, आपके वर्कर पे। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है, यहाँ पे सिंपल एक पॉड डिप्लॉय कर रहा है, राइट, और पॉड का कंटेनर, पॉड का जो वैल्यू क्या होगा वो क्या होगा। बट अगर मैं काइंड डिप्लॉयमेंट रखूंगा, ऑब्वियसली जो पॉड है, जिस तरह का जो लॉजिकल यूनिट है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अंदर जो इमेज मैं यूज कर रहा हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए वो रहेगा। सो आई शुड शो यू दैट एग्जांपल आल्सो डिप्लॉयमेंट का, देन यू विल एबल टू रीड pod deployment example, deployment kind example। इस वाले में ही जाते हैं, यहाँ पे एक ना एक कोई YAML फाइल इन्होंने शो जरूर किया होगा। या ये एक देखो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट YAML है, जिसका काइंड क्या है, जैसे पॉड था वैसे काइंड क्या है इसका, डिप्लॉयमेंट, राइट। इसका मेटा डेटा मतलब नाम क्या दे दिया, एनजिंग्स डिप्लॉयमेंट, करेक्ट, जो मैं बोल रहा था कि नाम यस होगा, राइट। यस। फिर हाउ आई विल राइट आइडेंटिफाई एज एन एप्लीकेशन, तो मैंने इसका ऐप नेम क्या दे दिया, एनजिंग्स, राइट। और ये जो टेम्पलेट डिफाइन किया है, जो भी जिसके लिए यूज हो रहा है वो एनजिंग्स, और रेप्लिकास कितना दे दिया, टू टेल्स डिप्लॉयमेंट टू रन टू पॉड मैचिंग विच दिस टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट कहाँ से उसने, लेबल कहाँ से लिया, आपने ऊपर में स्पेसिफिकेशन में डिफाइन किया ना ऐप एज एन एनजिंग, तो टेम्पलेट कहाँ से उठा रहा है, एनजिंग्स करके ले रहा है, ये पूरा का पूरा इसको मिलेगा। और क्या चीज एक्चुअल वो कर रहा है, वो स्पेक में डिफाइंड है कि आई वांट अ कंटेनर, राइट, अ सिंगल कंटेनर पोड in which my container name is what, nginx, and which image I'm using Deepak, this your image. voice is not audible to me. Is it for me or everyone? Yeah, please check. It's I good for think me. it's good for me. Sonia, can you reconnect maybe? Hello? Hello, Sonia, can you reconnect? Let me check with Sonia. Sonia, are you speaking on mute or what? Okay, she will be rejoining.
So you see, right, what I was saying there, right, is basically, right, I'm passing this information and all this, right, specs, or generally, right, if you read somewhere, right, they generally known as pets and sets, something you, right, sets and something you carry on, right, as a pets. तो बेसिकली जो आप सेट कर रहे हो, क्या आपके पॉड का नाम, आपके राइट कंटेनर का नाम, वो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जा रही है, एपीआई सर्वर इस पूरे रिक्वेस्ट को पार्स करता है और पार्स करके कहाँ डालता है, एचसीडी डेटाबेस में स्टोर करता है। तभी उसको आइडेंटिफाई होगा ना कि ये वाला पॉड कहाँ पे है, कितने हैं, तो कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है और कहाँ पे स्टोर कर रहा है उसका काउंट, वो सब सारी स्टोरेज कहाँ पे करता है, एज अ की वैल्यू पेयर एचसीडी डेटाबेस पे। सो दैट as a right end user, as a developer or operation engineer or whoever is managing the application will get the stats, right, and HCD is where the stats would be saved. Is this clear which I am saying? Yes. Yes. Deepak, in this example, we have mentioned metadata 2 times, yeah? Where metadata 2 times? Yeah, the first metadata name, That engines, is deployment see, name, yeah. this metadata is for pod and this is for the template. Okay, so in that pod itself, we are creating a template also, yeah, which we Yes. can use later on. Yes. Okay. Okay, got it. So in some cases you will say, right, we will not be using template. You should be, right, Yeah. matlab aware there is a flexibility, right, in terms, right, if you want to use it as a template, right, what is defined, right, earlier, right, so you will be using this name to filter it out and, right, identify, right, what selector it is, right, this Yeah, is so yeah. yeah, so we can define multiple template and use it. Yeah, Yes. and that. Say for example, if you see the command, I right after doing this kubectl apply command, right, from this either a static file or a file in some server, I can use that kubectl create and that YAML file name, or if it is a link or URL somewhere, right, which is, right, available centrally in your network, right, in your organization, then you can use also kubectl apply -5. But once it is done, basically you have, right, hit the API server, right, after the kubectl command apply, you are actually hitting the API server. Now API server had what, pass the information, right, and stored. Now see, after that, when you describe your deployment, Nginx deployment, right, it will show you, right, what all, right, basically stored. So now see, the stats are coming here, right, so what are the containers, what is the label name, right, this is the port template, right, which is Yeah, shown to you, right, in that way it will show yeah. what replicas, what is the desired state, how many, right, basically are available now, right, as a deployment which has been deployed. So all this information are stored and coming to you because of the HCD database, right, and Okay. Kube API server is parsing and storing there, right. Okay. And if you want to see how many pods you are running, this is the about the information about your deployment. Now if you do kubectl get pods, right, and you filter, right, कि मुझे सिर्फ app engines का देखना है, सिर्फ list करना है app engines वाले, है ना, see, this is where the labeling, right, comes in, right, importance. Now you can see, right, there are Okay. two same pods with the same containers running, right, in your workers with different name, right. Yeah. Yeah. Obviously you are having two instances of pods running two same containers, same service out there, right, Okay. on port 80. Yeah. So this is basically, right, you have to, right, understand. Now I will jump. What happened? Just one question. Actually, there are lots of questions already. It's fine. Cautions are good. At least, right, it will clear. Right. See, I understand. Right. Many of you would not be in line, or right, in the near future going to work. Maybe, right. For example, I'm talking when I say near future, maybe, right, in 1 or 2 months or 3 months. Right. Most of are not in that project. But awareness, right, or these keywords or knowledge, right, in your resume will, right, have a good, right, kind of, you can say, gives a visibility in a resume. So you should be an aware, right, and with certain labs, you know, it is not a big thing actually, right, आराम से पढ़ा जा सकता है. But yes, पूछो caution so that you will get into the core. Yeah. So वो file open कीजिए Okay. जो भी example. Sure. Nginx. So I think we are using Nginx as a load balancer, right? No. Okay. Why you're thinking like that? Nginx use होता है load balancer की तरह, that's fine. But here Nginx is not a load balancer. Nginx is
you can say kind of a web server, right, which is getting deployed, can be used as a load balancer for certain application further, अगर उसको चाहिए डिप्लॉय करने के अच्छा, बाद। ये क्यूबरनेट्स में फिर जैसे लोड बैलेंसर अगर हमें तो Kubernetes का अपना एक सर्विस टाइप होता है। लेट मी शो यू सर्विस एग्जांपल है क्या यहाँ पे, सर्विस सर्विस स्टेटफुल एप्लीकेशन सर्विस डिलीवरी। कैटलॉग है लास्ट में, कहाँ पे सर्विस नीचे कैटलॉग दिख रहा है? सर्विस कैटलॉग है, ये नीचे नीचे, ये इसके नीचे बस। नहीं नहीं, हाँ, ये बेसिकली नहीं है। लेट मी शो ओके, यू समथिंग, राइट। कुबरनेटिस सर्विस टाइप, अगर कुबरनेटिस का लोड बैलेंसर की बात करें, कुबरनेटिस अपने आप में जब सर्विस देता है ना, तो किस तरीके से अभी क्या है, पूरा क्लस्टर्ड है, राइट। अब मेरा वर्कर नोड्स बहुत सारे हैं, है ना, और उनमें मेरा, राइट, यू कैन से मल्टीपल इंस्टेंसेस और एप्लीकेशन है। मैं एज अ यूजर क्या हिट करूं कि मैं उस सर्विस पे पहुंच जाऊं, राइट, और मेरे को वो सर्विस मिले। तो दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि मेरे को पता है मेरा क्लस्टर आईपी, राइट, और क्लस्टर आईपी पे मैं हिट मारूं, राइट। तो मेरे को क्लस्टर आईपी मैंने हिट मारा, और राइट, क्लस्टर को पता है कि कहाँ रूट करना है, और वो मुझे लाके डिटेल दे देगा, राइट। बट इट वुड नॉट बी गिवन टू यूजर ना, क्लस्टर आईपी हम यूजर को तो देंगे नहीं। दूसरा है यस कि मैं यस यूजर को क्या दे दूंगा, नोड पोर्ट, मेरा जो नोड आईपी बेसिकली, राइट। मैं उसको बोलूंगा ये ले नोड आईपी, ले ले नोड आईपी पे हिट मार, जैसे हम डायरेक्टली सर्वर को हिट मारते हैं, करेक्ट। तो मैं बोलूंगा ये नोड पे तेरा सर्विस चल रहा है, इस नोड पे तो हिट मार। तो जब भी वो नोड पे हिट करेगा किसी इंटरनेट से, ऑब्वियसली यूजिंग योर राइट क्लाउड एज नेटवर्क, राइट, वो राउट करेगा उस आईपी को, राइट, ले जाएगा आपके कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म पे, वो उसको वो देखेगा, बोलेगा ओके ये आईपी का राउटिंग इस जगह करना है, और अंदर नोड पे जाके, राइट, वहां पे जो सर्विस है वहां पे वो जो भी क्यू प्रॉक्सी कंपोनेंट है उससे उसके तो आइडेंटिफाई करेगा ये किस पॉड पे है, किस पॉड के किस कंटेनर पे, वहां पे आपको ले जाके वो सर्विस आपको दे देगा। एक तो ये हो गया। नाउ लोड बैलेंसर टाइप भी है, जैसे नोडपोर्ट, वो क्या है, नोडपोर्ट ऑन स्टीरॉइड्स बोल सकते हो, मतलब और थोड़ा ताकत दे दिया, राइट, नोडपोर्ट को। तो उसमें क्या है, आपको मैं इसका आईपी नहीं दूंगा, अपने नोड का आईपी आपको मैंने, राइट, अपना एक एक्सपोज आईपी एक्सपोज किया है, जो कि एज अ लोड बैलेंसर है, जो कि राइट नोड का आईपी नहीं है। आप क्या करोगे, जो आपको वन ऑफ द इंटरनेट एक्सेसिबल आईपी है वो दिया है, आप उस पर हिट करते हो, रिक्वेस्ट आपका, राइट, उस लोड बैलेंसर कंपोनेंट पे जा रहा है, जिसको नहीं पता कौन से नोड पे जाना है, बट वो आईपी आगे, राइट, आपके कुबरनेटिस के जो भी राउटिंग है उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा नोड है जिस पे मुझे जाना है, वहां से फिर वो आगे उस नोड पे जाके जो नोड पोर्ट करता था सेम वही काम करेगा। बट आपने क्या कर दिया, अब नोड आईपी के बदले में आप उनको एक ऐसा नॉर्मल आईपी दे रहे हो जैसे लोड बैलेंसर आईपी। तो देयर आर डिफरेंट कुबरनेटिस सर्विस टाइप्स। अगर आप ओके सो कुबरनेटिस सर्विस टाइप्स देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेंगे सैंपल्स इनके, जैसे कि इसमें टाइप नहीं दिया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया टाइप, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छे डेफिनेशन से बताया होगा उन्होंने। दैट मींस कि जो मतलब हम स्टैटिक आईपी उसको असाइन कर सकते हैं right? ऑब्वियसली यस। और मैं मेरे को मतलब आपको जो दिखाना है और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, राइट, वो यहाँ पे, हाँ, ये वाला, दिस इज व्हाट पब्लिशिंग सर्विस टाइप्स। तो ये जो चीज है ना, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है, अगर आपको टाइम मिले तो इसको पढ़ना। तो हमारे नेटवर्क एग्जाम्पल पे जो हम एग्जाम्पल लैब के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे एक मैंने बोला क्लस्टर आईपी है, नोड पोर्ट है, ठीक है, कहाँ गए भाई, हम सीधा नोड पोर्ट पे चले गए, हाँ, नोड पोर्ट है, ठीक है, एक लोड बैलेंसर है, एक्सटर्नल नेम है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सपोज द सर्विस ऑन ईच नोड्स आईपी एट अ स्टैटिक पोर्ट, है ना। लोड बैलेंसर एक्सपोज द सर्विस एक्सटर्नली यूजिंग अ क्लाउड प्रोवाइडर्स लोड बैलेंसर, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल जो लोड बैलेंसर एक्सपोज किया हुआ है यूजर को, सिर्फ वो पता है, अंदर का कुछ नहीं पता, वो दिया है, राइट। नोड पोर्ट एंड क्लस्टर आईपी सर्विसेज, राइट, टू विच द एक्सटर्नल लोड बैलेंसर राउट्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, अपने आप ही बना देता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो राउटिंग पूरा का पूरा डिफाइन कर देता है। आगे का सारा चीज आइदर नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी की तरह होगा। ये क्या क्लस्टर एक्सपोज द सर्विस ऑफ क्लस्टर इंटरनल आईपी विच आई विल नेवर डू, राइट, फॉर कस्टमर्स, राइट, आउटसाइड कस्टमर्स, इंटरनली ठीक है। Choosing the values make the service only reachable from within the cluster. You got my point? यस यस मुझे लगा कि वो अंदर जो सर्वर था वहां पर भी लोड बैलेंसर लगा सकते हैं नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, राइट। आपका सर्वर तो पार्ट ऑफ क्लस्टर है, राइट।
तो ऑब्वियसली क्लस्टर आईपी रहेगा तो राइट आप एक्सेस कर पाओगे इवन मास्टर को और राइट उसके वर्कर को, है ना। नोड पोर्ट क्या यस। होगा, एक वर्कर का आईपी होगा। और इसमें ठीक है। सर जैसे वर्कर या मास्टर नोड रीस्टार्ट होता है, हम्म। तो नॉर्मली हम लैब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आईपी जो चेंज होगा कि स्टैटिक आईपी इसमें कुछ अलग से हम प्रोवाइड? जब भी हम लैब कैटाकोडा में रन करेंगे हम देख पाएंगे कि हमारा क्लस्टर आईपी क्या है, राइट। वो उनका इन्वायरमेंट जो है, जो उन्होंने अपना बैकएंड रखा हुआ है सर्वर, राइट, सर्वर वहाँ पे जो भी सेटअप है, राइट, उसका आईपी हमें मिलेगा, राइट, उस रेंज पे। तो वी विल एबल टू विजुअलाइज, राइट, हमें पता चलेगा हाँ क्लस्टर आईपी होता है, नोड पोर्ट आईपी होता है, राइट। ये सब चीजें हमें दिखेंगी। ठीक है, ओके। यस नाउ यस। नाउ लेट्स एनी मोर क्वेश्चंस? एज ऑफ नो नो। Okay, perfect. Okay, now I was right. We talked about two important right components, right? Kube API server and right etcd. Then we have what controller. So जो ये क्यूब कंट्रोलर बोल लो या कंट्रोलर बोल लो, बात एक है, राइट, बट एनीवे इट इज अ कंट्रोलर. So controller is the one, right, which take cares of, right, what application is set, right, how is the health of the container that is right deployed, right. So how is the health of a pod which is deployed. So this controller is in direct communication with their attached, right, workers, right, which it is taking care of. So kube controller is responsible, right, in terms of healing capability, high availability, right. This component is right talking how it is talk. We have to understand worker, right, modules also, which you will hear by me right soon, right. It's about like kubelets, right, and obviously your runtime, which is attached to kubelets, through which, right, basically we have talked about the protocol container network interface, right, using CNI protocol and everything, right. It talks. Now obviously kube controller is responsible for this, and but who will be scheduling your deployment? So there is what, another component called what, scheduler. So scheduler and containers, controllers basically, right, all are in touch. Obviously क्यूब एपीआई सर्वर ने etcd database को दिया है, क्यूब कंट्रोलर, राइट, इज इन अ वे, राइट, एपीआई सर्वर से भी कम्युनिकेट कर रहा है. तो दिस ऑल आर इन टच with each other. My bad. In a way. ठीक है, ऐसे ही. तो ऑब्वियसली मैंने जो लाइन बनाया इसका मतलब ये है, क्यूब एपीआई सर्वर क्यूब कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, राइट, एंड शेड्यूलर भी इन अ वे कनेक्टेड है. एंड शेड्यूलर इज समथिंग लाइक विच एक्चुअली डू योर राइट डिप्लॉयमेंट, राइट, अ वर्कर. जैसे आप इसको अगर मेटाफोरिकली देखो तो ये इस तरीके से, आपको पता है ना, आप जैसे पोर्ट होते हैं अपने, जेएनपीटी पोर्ट है ना, बहुत फेमस उरन में, महाराष्ट्र में. आर यू अवेयर? जहाँ से शिप्स में, राइट, वी सेंड आवर, राइट, you can say stuffs, right, to outer world business point of view, perishable goods, whatever. Are you aware यस of that? यस। हाँ ना. इम्पोर्टेड। तो हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है, तो वहां पे क्या होता है, देर इज अ राइट कस्टम ऑफिसर, राइट, सिट्स राइट इन, राइट, से एग्जाम्पल टेक जेएनपीटी बोर्ड का. तो ये उरन एक लोकेशन है, राइट, वहां पे है. तो वहाँ पे कमिश्नर बैठा रहेगा जो कि बेसिकली राइट मैनेजिंग, राइट, एवरीथिंग, कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए. तो ऑब्वियसली जो जो भी एक्सपोर्ट एजेंट है या इंपोर्ट एजेंट है, वो क्या करता है, अपने जो भी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स है उसकी डिटेल्स, राइट, पूरा फॉर्म बना के फिल करके उसका क्या है, अप्रूवल लेता है कि भाई ये जाएगा कि नहीं जाएगा. तो अप्रूवल कौन देता है? एपीआई सर्वर, है ना. एपीआई सर्वर क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट देख रहा है, उस रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करता है अपने राइट डेटाबेस सिस्टम्स में, अपने इंजीनियर्स के थ्रू बोलेगा कि सारे जो भी राइट नाम है, क्या कौन से कंटेनर में इसको जाना है, क्या है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है. तो ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन, राइट, काइंड ऑफ राइट दैट जेएनपीटी एरिया. ना उसने देखा और एवरीथिंग लुक्स गुड, राइट, उसने पार्स किया, सब कुछ सही लगा उसको, रिक्वेस्ट जो भी है, और उसने बोला कि this in this right particular time, right, it should be right placed into one of the ship. Now at this has been scheduled. Now scheduler will do what, it it will through cube controller will connect to the captain of the ship. शिप तो कहाँ है, पानी में है, राइट, कहीं पे, है ना, उड़न के उधर में, जो भी पोर्ट के उधर में. तो वो क्यूब कंट्रोलर उसको बोलेगा कि दिस इज द डेट यू शुड ब्रिंग योर शिप,
तो वो अपना जो शिप है वो लेकर आएगा, शिप को समझ लो वो वर्कर है, राइट, वो लेकर आया, एंड scheduler, राइट, थ्रू cranes or whatever, right, will do the right deployment of containers right there. And the ship captain, which is kubelet, right, in worker node, and right the kube controller, right, which is managing the communication, right, between the ship and this will, right, in connection, right, वो बताएगा ओके आप आओ, फिर जब वो आएगा तो scheduler को बोलेगा वो आ गया है, अब इसमें क्या कर दो, डाल दो connection. So obviously this is the way, right, basically the same thing happens in a very similar way, right, when Kubernetes want to do deploy. So through kube controller, right, it is getting attached with the container, and scheduler, right, as per the connect with the kube controller, do the deployment of, right, whatever the pod information that you have shared, right, it will get deployed out there, right. So this is how. And remember entire this thing, right, kube API server, kube controller, scheduler, etcd are entirely as a common will known as what, control plane. क्या बोलेंगे इनको, कंट्रोल प्लेन ऑफ द कुबरनेटिस, जहां से सारा कंट्रोल हो रहा है. लिख देते हैं. Everyone understood the master components and their right work? Hello. Now obviously right, ये सब करने के लिए कुछ तो चाहिए कि अपना नेटवर्क राइट अवेयरनेस हो, है ना, कि भाई क्या करना है. तो ऑब्वियसली जैसे क्यूब प्रॉक्सी वर्कर में है, राइट, देयर इज अ राइट क्यूब प्रॉक्सी सर्वर आल्सो देयर, राइट, व्हिच इज मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा नेटवर्क में से अटैच है, मैं किस तरह से उससे कम्युनिकेट करूंगा, राइट, वर्कर टू मास्टर टू वर्कर कम्युनिकेशन, पॉड टू वर्कर कम्युनिकेशन, राइट, पॉड टू कंटेनर कम्युनिकेशन, ये जो चीज सारी चीजें हैं ये कौन कर रहा है, वी नीड राइट कम्युनिकेशन थ्रू विच दिस ऑल डज, राइट. सो ऑब्वियसली देयर इज अ क्यूब डीएनएस entity, right, which is right also should be there. And remember you don't need to do all the sort of setting routing definition करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही define कर देता है. So you will see right lot of such right services which is binded up with right Kubernetes, जैसे for networking called Weaver or Flannel, right. These are certain terminologies that you will right here कि Flannel based मेरा right network setup है या Weaver based है. तो जब आप सेटअप करते हो तो आप ऑलरेडी प्री डिफाइंड राइट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डाल देते हो, आइदर वो फ्लैनल हो सकता है, आइदर वीवर हो सकता है. तो आई एम जस्ट राइटिंग राइट वीवर स्लैश flannel which defines right all the network entities and how the right network communication will happen. And obviously every right worker node would have what their you can say component called kube proxy, right, which will be taking care of it. Now let's come to right the worker components. हमने pod word तो बना दिए हैं, ठीक है, but basically क्यू प्रॉक्सी को मतलब सर मैनेज करना मतलब इसका कुछ वेब यूआई डैशबोर्ड है क्या, मैंने क्यू कुछ ऐसा प्रॉक्सी पढ़ा. को आप ना इस तरीके से देख लो, डॉकर जीरो डॉकर जीरो के बारे में सुना था ना, हाँ डॉकर जीरो यस. नेटवर्क, तो क्या कर रहा था, एक तरह का प्रॉक्सिंग कर रहा था ना, या ब्रिज सिस्टम से नेटवर्किंग. बात करके कि भाई हाँ ये कहाँ पे किस कंटेनर पे राउट करना है. तो ये यहाँ पे क्यू प्रॉक्सी उसी वही एंटिटी है, एक नेटवर्क एंटिटी है जो इंश्योर करेगा कि आप एक वर्कर से वर्कर पे कैसे कम्युनिकेट करोगे, एक वर्कर से पॉड पे कैसे जाओगे, ठीक है, एक वर्कर से पॉड के थ्रू कंटेनर में कैसे जाओगे. तो जितने भी नेटवर्क राउटिंग और जो भी डेफिनेशन है यूजिंग सिस्टम, राइट, इट विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. गॉट माय पॉइंट नाउ? और ये जो क्लस्टर की हमने बात की सर, अगर क्लस्टर या इसके जो लॉग्स वगैरह, अगर जैसे क्लस्टर के लॉग्स वगैरह होते हैं वो भी कहीं इसमें ऐसा कुछ स्टोर वगैरह. देखो लॉग मैनेजमेंट के लिए भी प्रोसेस है, एक फ्लुएंटी करके राइट कंपोनेंट है जो आप यूज कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी, आप अपना खुद का एक लॉगिंग मैकेनिज्म लिख सकते हो. और क्यूब जो आपका जो क्यूब मास्टर है, राइट, ऑब्वियसली इसकी जो कमांड्स है वो तो इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रहे हैं, राइट, कि क्या हेल्थ है क्या नहीं है. बट स्पेसिफिकली इफ यू वांट राइट स्पेसिफिक लॉगिंग ऑफ कंटेनर और पॉड शुड हैपन, then there is right outside component or right utility written called fluentd that you can also right place in your worker node. Okay, क्या नाम बताया सर आपने, for your logging right of containers and everything. क्या नहीं बताया सर आपने. Fluent D, FLUENT, Fluent D, right.
इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लुएंटली, ये कुबरनेटिस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, पॉड लॉग्स वगैरह को ना वो करता है, राइट, टू लॉगिंग एंड पॉइंट्स एप्लीकेशन एंड क्लस्टर लॉग्स, राइट, उसको एक्सपोज उसी को यूटिलाइज करता है। ये 2 लॉगिंग एंड पॉइंट्स दे रहा है एप्लीकेशन एंड क्लस्टर लॉग्स के लिए, राइट, एंड स्टैक ड्राइवर, राइट, लॉगिंग फॉर यूज, राइट, जो भी है, एंड बिहाइंड द सीन देयर इज अ लॉगिंग एजेंट दैट टेक केयर्स ऑफ लॉग कलेक्शन, पार्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज नोन एज व्हाट, फ्लुएंटी। ओके, क्लियर? आपका मतलब क्वेरी ठीक है, क्लियर हुआ ना? बट इट इज राइट ओपन, मतलब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुबरनेटिस, यू आर जस्ट यूजिंग विद कुबरनेटिस। ओके, जैसे हम लॉग स्टेज डाल देते हैं ना, कीबाना एज अ डैशबोर्डिंग करते हैं, बट विद लॉग स्टेज फॉर, राइट, डूइंग दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी, बट लॉग कलेक्शन, पार्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इतना, ये 3 चीज। ओके, लेट्स जंप इन हियर नाउ। बेसिकली क्यूब कंट्रोलर कैसे बात करेगा, है ना, किस तरीके से? तो देयर इज राइट अ डेमन, राइट, which would be running in each worker node ना, हर क्लाइंट सर्वर मॉडल में यही रहता है ना, कुछ तो एजेंट होना चाहिए, राइट, वर्कर नोड में। तो ये जो एजेंट बोल लो, राइट, और डेमन बोलो, क्या है? क्यूबलेट है। सो क्यूबलेट बेसिकली क्या कर रहा है? कंट्रोल सेट, क्यूबलेट क्या कर रहा है? बेसिकली हैव टू राइट हैव अ रन टाइम, राइट, कोई ना कोई तो इंजन रहना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे ऑब्वियसली एवरी वर्कर पे कोई भी रन टाइम रहेगा, है ना। रन टाइम मैं जो बोल रहा हूँ किसका? कंटेनर रन टाइम। तो कोई भी कंटेनर रन टाइम के साथ वो क्या रहता है? अटैच रहता है। जैसे हमने बोला था डॉकर इंजन इज अ कंटेनर रन टाइम, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रॉडर टर्म लिख रहा हूँ, कंटेनर रन टाइम। So container runtime could be a Docker engine, could be a CRIO, right? Whatever, right, which is supported, right, with Kubernetes, right? If you don't want to use Docker, you might move to CRIO or any other, right, technology they are providing as a container creation, right? Now, this kubelet how is right talking to this container runtime request? So there is a process which is right using a CNI protocol, which basically right interacts, right, with this container, right, क्या लिख के गया, हाँ, इन दोनों के बीच में, and that process is known as what? Supervisor D, which is a daemon, right, which create a kind of a communication channel between kubelet and supervisor D between container runtime. इनके बीच में क्या है? Communication. Sorry guys. Now अभी क्या मेरे पास रिक्वेस्ट आया और बोला कि ओके पॉड पॉड बनाना है, उस पॉड के अंदर राइट 2 इमेजेस हैं, वो लॉन्च करना है। तो ऑब्वियसली कंटेनर रन टाइम को क्या चाहिए? वो इमेज भी इमेज है तो उस इमेज को पुल भी तो करना पड़ेगा। चलो पॉड तो एक लॉजिकल यूनिट है, उसको प्लेस कर दिया कि हाँ एक पॉड इन्फॉर्मेशन में डाल रहा हूँ, और बेसिकली इन अ वे राइट उस मशीन पे क्या है, इतने सारे कंटेनर रहेंगे और एक नेम स्पेस में डिवाइडेड है, राइट, नेम स्पेस ऑफ पॉड एंड नेम स्पेस ऑफ डिफरेंट पॉड्स, और राइट उसके अंदर जो कंटेनर नेम स्पेस है उस हिसाब से। तो ये बोलेगा ओके बात करेंगे, तो बोलेगा ओके आई एम टेकिंग केयर एंड आई एम गोइंग टू डिप्लॉय योर पॉड हेयर, okay, so I'm going to deploy, but I need this right two container images, right, which is mentioned in the pod. So obviously kubelet will interact with kube controller, and kube controller, right, which using its control plane component, right, would able to talk to one of the container registries, जो भी आपने मेंशन किया होगा आपके पॉड पे, जो कंटेनर रजिस्ट्री है आपका, जहां पे आपने इमेज स्टोर करके रखा है, तो वो क्या करेगा उसके साथ? जैसे नॉर्मल वे में होता था, ये कंटेनर रजिस्ट्री से वो इमेज इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, right, and right this kubelet, right, will use it, right, and say okay this is now have been right identified, now you can download it, right, and basically do the container, right, creation, वो इमेज को रन कर दो और एक कंटेनर लॉन्च कर दो, राइट, जो भी आपका एप्लीकेशन कंटेनर है या वट एवर कंटेनर रेडिस कंटेनर, उसको पुल करके लाके रन कर दो। एंड नाउ दिस राइट कंटेनर रन टाइम इज डूइंग दिस, राइट,
So basically, if I say, so all these pods are running in this container runtime. Right? All these are part of this container runtime, in which, right, through this container runtime, all these pods and, right, their containers which are created are there. Is it this clear, this part, kubelets and container runtime? Beside this, there are few things ना. अभी मैं कैसे पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन करूंगा, ये एक अलग पॉड है, ये एक अलग पॉड है ना, ये एक अलग पॉड है, ये एक अलग पॉड है, इनके बीच में ऑब्वियसली वी नीड अनदर, राइट, component called what, kube proxy, which, right, is auto created, right, and, right, give all the communication channel, right, for your different kind of worker to worker, pod to pod communication, pod to worker communication, pod to, right, worker container communication, another pod. So this all will be taken care by what, kube proxy. Any query, questions? Container runtime, sir. It's not a virtual logical unit, right? It is not a logical unit, right? It is something, right, an isolated OS. मैं pod को OS नहीं बोलूंगा. Pod is not an, right, operating system, isolated operating system. Pod is a logical unit having information about what container it is running inside it. ठीक है? But at the end, all these containers which are running in your worker system are, right, actually, right, created because of what, you have a container runtime installed, right, in that worker machine. जस्ट मैंने यहाँ पे डॉकर डाला इस वर्कर पे ना, और क्यूबलेट, राइट, डॉकर से बात कर रहा है, डॉकर इंजन से बात करके ये कंटेनर्स क्रिएट कर रहा है ना, जब भी रिक्वेस्ट आ रही है. अभी नेटवर्क एंटिटी क्या क्या आ गए, आपका वर्कर का एक आईपी होगा, है ना, आपका पॉड का एक, राइट, आईपी होगा, ठीक है, आपका कंटेनर जो बने हैं उनका अपना अलग अलग आईपी होगा, करेक्ट. तो ये सारे आपके नेटवर्क नेम स्पेसेस रहेंगे, और ये क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू मैनेज है. बिल्कुल, यस. और वो जो मेन सर्विस है, कह सकते हैं क्यूबलेट, और उसके बीच में कंटेनर कंटेंट के वो, हाँ, मतलब सुपरवाइजर, मास्टर और वर्कर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, राइट, राइट, मास्टर टू द एजेंट इज हैपनिंग थ्रू द क्यूबलेट प्रोसेस. हाँ, और वो जो क्यूबलेट और कंटेनर कंटेंट के बीच में जो उसको जोड़ के रखता है वो हाँ, वो एक क्या है, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस है ना. अगर मुझे बात करनी है, क्यूबलेट को बोलना है कि भाई ये लॉन्च करो पॉड, राइट, ये कंटेनर लॉन्च करो, तो कैसे पास करेगा इन्फॉर्मेशन, वो पेलोड कैसे भेजेगा, तो वो सुपरवाइजर डी एक डेमन प्रोसेस है जो आपके लिए CNIs, राइट, डिफाइन कर रहा है. उसके थ्रू यू आर, राइट, दिस काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल, राइट, which, right, through which it is passing, right, or communicating with what, Docker engine or any runtime. Okay, so what I will do, right, basically ये जो मैंने आज आपको बताया है इसको थोड़ा सा वापस से एक्सप्लोर करना, ठीक है. ये सारे एक एक चीजों निकालो इसमें से, क्यूब API सर्वर उसको डिफाइन करो, क्यूब कंट्रोल इसका डेफिनेशंस लिखो कहीं पे, राइट, पढ़ के, ठीक है. और वीडियो को देखो और, राइट, उन डेफिनेशंस को समझो बेसिकली कि ये क्यों है, ये API सर्वर क्या है. वापस से एक बार, मतलब आज के दिन पे ये एक्सरसाइज करो कि क्यूबलेट, राइट, कंटेनर रन टाइम, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब DNS, क्यूब कंट्रोलर, शेड्यूलर, HCD, राइट, क्या क्यूब CTL, राइट, इनके बारे में पढ़ो. तो अभी देखो यहाँ पे दो चीज है. ये एक तो है कि ये जो बंदा है ये तो क्या है, कंपनी में काम करने वाला बंदा है जो कि, राइट, अपने वर्कलोड डाल रहा है. और जो यूजर होगा वो किसको यूज करेगा, यूजर तो वर्कर्स में जो सर्विसेज है उनको यूज करेगा, राइट. तो ऑब्वियसली ये जो वर्कर्स होंगे ये आउट से, मतलब आपके जो क्लाउड जहाँ पे भी आपने क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो उस क्लाउड का जो भी लोड बैलेंसर है, राइट, उसके साथ जो एंड यूजर होगा, राइट, वो उस पर कम्युनिकेट करेगा, करेक्ट. यस यस, मतलब मींस लोड बैलेंसर इंटरनेट हाँ फेसिंग. हाँ, इंटरनेट फेसिंग रहेगा, तो यूजर यहाँ पे हिट मारेगा एंड लोड बैलेंसर, राइट, एज पर योर रिक्वेस्ट, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जो आप कुबरनेटिस के थ्रू मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करेगा, राइट, वो वहां से ऐसे रीच करेगा इस एप्लीकेशन पे, राइट. वन ऑफ द वर्कर्स जाएगा, है ना, बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो उन वर्कर्स में वन ऑफ द वर्कर्स में, राइट, लैंड होगा और उस पर्टिकुलर सर्विस को वो एक्सेस कर पाएगा.
ओके अगर मैंने एक्सपोज नहीं किया मेरे राइट और इंटरनल एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ये यूजर एक्चुअली मैं ही हूँ एंटायर इनसाइड माय नेटवर्क, तो आई विल नॉट यूज लोड बैलेंसर, आई कैन यूज माय क्लस्टर आईपी टू इंटरेक्ट विद माय एप्लीकेशन, राइट। अगर मैं लोड बैलेंसर नहीं देना चाहता यूजर को, मैं बोलता नहीं मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर नहीं, मैं आपको डायरेक्ट अपना नोड आईपी दे देता हूँ, यूजर क्या करेगा जब हिट करेगा, ऑब्वियसली आपके क्लाउड के इंटरनेट गेटवे से राउट होकर ट्रैफिक कहाँ पहुंचेगा, सीधा सीधा नोड पे पहुंचेगा, है ना, जिस नोड पे आपको हिट करना है, करेक्ट। तो इसमें क्या हो गया, नोड पोर्ट वाले में ये सिनेरियो हो गया, विदाउट लोड बैलेंसर यू आर डायरेक्टली हिटिंग द राइट नोड आईपी, क्लस्टर आईपी, नॉट क्लस्टर पे, नोड आईपी, एक्सटर्नल यूजर की बात कर रहा हूँ, बाहर का, राइट। उसको मैं नोड आईपी दे रहा हूँ ना, हाँ हाँ। क्लस्टर आईपी दूंगा तो इंटरनल सारे चीजों को करता है, मैं सिर्फ नोड आईपी दे रहा हूँ, है ना। मे बी उस नोड का जो भी आईपी है, अगर उसको एक्सेस हो, अगर नेटवर्क को पता है कि हाँ ये नोड आईपी है तो उसको ले पाएगा, अगर नहीं है ब्लॉक हो जाएगा, राइट, आउटसाइड में, अगर एक्सपोज नहीं है, पब्लिक आईपी नहीं है नोड आईपी। और वो जो अगर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर है तो लोड बैलेंसर का जो आईपी वो क्यूब हाँ डीएनएस रिकॉर्ड में मेंशन हो रहा है। बिल्कुल, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा ना। यस। तो ये मैं जो बोला हूँ पहले वो एक्सरसाइज जरूर करना, राइट, ये सारे डेफिनेशंस करना, पॉड का डेफिनेशन भी जरूर लिखना, ठीक है। तो यू विल गेट राइट broader idea, right, what are the master component, what are the worker components, what this component have their use cases, and if you get time, right, today after doing that exercise, guys, तो एक बार इस पे जाना, कैटाकोडा प्लेग्राउंड फॉर कुबरनेटिस, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना। हाँ, बताऊंगा तो मैं ही पूरा, जो भी मेरे को जो इनिशियल जो आपको लैब्स करवाने हैं, मैं सारे लैब्स यहाँ पे कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो प्लेग्राउंड है ना, यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं अगर आप देखोगे तो, जैसे अभी ये बेसिक फर्स्ट है, इसके बाद आपको पूरा लैब सिनेरियो दिखेंगे कौन कौन से, ये राइट कुबरनेटिस लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे वो जो सर्विसेज है ना, आपके एपीआई सर्वर ये सब ब्रिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका नाम दिया है क्या, कंट्रोल प्लेन, है ना, कंट्रोल प्लेन इज जनरली मास्टर एंड नीचे क्या है, नोड, है ना, विच वुड बी अ वर्कर, लेट इट गेट इट स्टार्टेड। सो कुबरनेटिस स्टार्ट हो गया और क्लस्टर इन्फो देख रहे हैं यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कुबरनेटिस मास्टर राइट रन कर रहा है, इसके पीछे का उसने अभी इनलाइन नहीं किया, हमारे आगे के एग्जांपल्स में हम देखेंगे वो एपीआई सर्वर सब लेकर आ रहा है, हम सब वो सर्विसेज भी देख पाएंगे। और क्यूब डीएनएस राइट जो मैंने आपको लिख के दिया था इज रनिंग राइट, ऑब्वियसली फॉर knowing the worker and everything, right, उनका जो रिकॉर्ड है राइट वो क्यूब डीएनएस मैनेज कर रहा है। नाउ कंटिन्यू किया, ठीक है, अभी नेक्स्ट सिनेरियो पे गए, ये इनिशियल सिनेरियो, बाकी सारे सिनेरियोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगल नोड क्लस्टर, मल्टी नोड क्लस्टर, कंटेनर यूजिंग राइट kubectl, राइट, YAML वे ऑफ राइट डूइंग डिप्लॉयमेंट, एक गेस्ट बुक राइट, स्टेटलेस एप्लीकेशन, नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन, राइट, सो ऑल दिस राइट वी विल बी डूइंग। सो मैं आपको इनिशियली ये बताऊंगा, और राइट हम लोग इनग्रेस का भी कर सकते हैं, लाइवलीनेस भी कर सकते हैं, सो बेसिकली यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा हेल्म के बारे में जाना है, हेल्म क्या है, कुछ नहीं है, हेल्म एक बहुत ही ऐसे लोग बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या है, हेल्म कुछ नहीं है, हेल्म एक तरह का पैकेज मैनेजर है, जैसे यम होता है कुबरनेटिस के केसेस में, ठीक है। तो हेल्म में हेल्म का लैब करना है तो यहाँ पे हेल्म का लैब भी है, राइट, आप उसको भी पैकेज मैनेजर को भी आप कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं, ये सिनेरियो अगर आपने पूरा किया राइट, तो ऑब्वियसली यू विल बी राइट, यू विल हैव अ वेरी गुड अवेयरनेस कि किस तरीके से राइट दैट कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म पे काम होता है, क्या होता है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज तो आपको काफी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ओके सो आई विल बाइंड अप हियर, एक्सप्लोर करना ये कैटाकोडा कुबरनेटिस प्लेग्राउंड को थोड़ा, ठीक है, मौका मिले तो करना, रिपीट कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है। और आपका ये कुछ नहीं, सेकंड लैब के बाद वो आपको ना जीमेल के साथ लॉगिन करने बोलेगा, कोई चार्जेस नहीं है, जीमेल से लॉगिन कर लेना, सो दैट राइट यू राइट, तो बेसिकली आपकी हिस्ट्री वो मैनेज करता है अकाउंट लेवल से, आपने कब क्या किया कैसे किया, राइट, और आप रिपीट कर सकते हो कितनी बार, लैब फ्री है ये। दीपक, एक क्वेश्चन था। जैसे ये कुबरनेटिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना रोल, तो हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्या, जस्ट मैनेज करना? हाँ सिर्फ मैनेज करना, राइट, देखो एक माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन डेवलपर होगा, है ना,
वो तो क्या करेगा, वो सब अपने एप्लीकेशन इमेजेस क्रिएट कर रहा है ना। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, इज वेरी सिमिलर टू इन टर्म्स ऑफ, राइट, मैनेजिंग द प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा ना। अगर एपीआई सर्वर डाउन होता है तो आप कैसे चेक करोगे, है ना। समझ में आया? तो kubectl कमांड होगा, उसके थ्रू पता चले, उसको स्टार्ट स्टॉप करना, आपके डिप्लॉयमेंट्स करवाना, राइट, आपके सर्विस कंट्रोलर्स बनाना, हेल्थ चेक करना, राइट। ये जो जितने भी एक्टिविटीज हैं, वो जो कमांड नॉलेज है, राइट, थ्रू kubectl हाउ यू विल मैनेज, राइट, कम्स अंडर, राइट, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव kubectl, राइट, kubernetes एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। और डेवलपर कुड बी राइट अ kubernetes एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो, है ना, कर सकता है ना वो भी, अगर जिसको नॉलेज है, जो बना रहा है और वो कुबरनेटिस में अपने एप्लीकेशन को कर रहा है, तो वो भी एक एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। इन डेवऑप्स, राइट, देयर इज नथिंग called, right, a separate operations or separate, right, development. A developer can also, right, manage the platform. So in that context, but आज के डेट में, yes, अगर कोई kubernetes administrator बोलेगा तो they would be more looking whether you have a, right, good hands on kubectl commands and, right, understanding, right, the entire the fauna, right, or you can say the ecosystem of, right, platform, kubernetes platform system. Okay. ओके दीपक, वन मोर थिंग, वो टेराफॉर्म के मुझे ये शेयर करना। कौन सा? अरे वो हाँ एसटीएस वाला। हाँ हाँ माय बैड। ठीक है, आज ही मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने ठीक है भेजा हुआ चलेगा। है एक स्टूडेंट को, बस मुझे वो भी आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ठीक है चलेगा। ओके, मैं आज ही भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ ओके थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू। चलो, ओके, एवरीवन, बाय। एनी लास्ट क्वेश्चंस अगर कुछ है तो बताओ। आई एम नॉट इन दीपक हरी एक बार, एक्चुअली। हाँ एक डायग्राम पे जाओ एक बार क्या। या इसमें जो ऐसे लेवल ऐप वन करके बहुत सारे हमने इंस्टेंसेस लॉन्च किए एक वर्कर नोड के अंदर, तो इनका कोई नेम स्पेस होता है क्या? हाउ आइडेंटिफाई कैसे होते हैं कि ये वाला है वाला है? बेसिकली इट इज अ रेप्लिकेशन। इसका कोई ऐसा हाँ, नाम नहीं होता है। मतलब लेवल एफ ओके, वन के कितने इंस्टेंसेस चाहिए मुझे? 3 हाँ, चाहिए। तो हाँ, हाँ, रिकॉर्ड इसके पास कितने? 3 चलने चाहिए ये हाँ, ओके, रिकॉर्ड। अब ये जरूरी नहीं कि हाँ, इसी नोड पे हो, किसी और नोड पे भी हो सकते हैं, राइट। हाँ, मतलब हाँ, 3 होने राइट, चाहिए। अभी मान लो राइट, इसमें कुछ इशू आ गया हाँ, और आपने रेप्लिकेशन 3 रखा था, अब चल कितने रहे हैं, राइट, आपके दो, क्लस्टर में 2। तो अब दो, इसे पता चल जाएगा, अलार्म हो जाएगा, अरे ये तो 2 ही चल रहे हैं, राइट। तो वो क्या करेगा, ओके, तीसरा ब्रिंग अप करेगा कहीं किसी और वर्कर नोड पे। और ओके, जो लेकिन मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस की आइडेंटिटी नहीं है क्या इसकी, मतलब? नो, इट्स नो आइडिया, इट इज अ रेप्लिकेशन बेस्ड क्वेरी। ओके, चल ओके, रहे हैं कि मतलब नहीं चल रहे हैं, हाँ। उसको ये किसी पता है एक कहाँ पर्टिकुलर, चल रहे हैं, उसको ये पता है कि किस इंस्टेंस में चल रहे हैं। ठीक है, हम्म, ये लेबल्स, हम्म, ओके, उसके थ्रू इट विल आइडेंटिफाई। एक पर्टिकुलर लेवल का आइडिया नहीं है कि मतलब अगर उसमें कुछ इशू है, कुछ फाइंड आउट करना है तो वो नहीं होगा इसमें, ना ना इस ना लेवल पे? ना ना, हाँ। ओके, वर्कलोड अवेलेबिलिटी इज देयर एंड सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी इज देयर, ओके, दैट अवॉइड। ओके, ओके, अगर कुछ इशू आया, आपको डिबग करना है, नहीं आ रहा, आप वापस से आप कर रहे हो, हम्म, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप नहीं जा पाओगे, राइट। आपको हाँ, आपको उस जो अवेलेबल है वही मिलेगा। तो फिर आपको वापस से रीडिप्लॉय मारना पड़ सकता है ना, ये अगर। ओके, ओके, गॉट इट दीपक, थैंक यू। चलो, ओके। एंड जो ये कंटेनर रजिस्ट्री है, कौन सा? ये क्यू कंट्रोलर से जो कंटेनर रजिस्ट्री हमने इमेज के लिए, हाँ, तो जैसे लेट मी शो यू एग्जांपल दिया था। ये कंटेनर रजिस्ट्री का कहीं ना कहीं पाथ हम मेंशन करते होंगे। बिल्कुल, हाँ, वही मैं दिखाने जा रहा था आपको। हमने एक क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट खोला था ना, तो ये देख रहे हो इमेज, हाँ राइट। यस। इसमें इसने क्या डाला है, ये तो लग रहा है नॉर्मल बॉक्स में ही, उसी उसमें ही है। बट मैंने एक दूसरा एग्जांपल आपको भी दिखाया था जिसमें, राइट, एक डिप्लॉयमेंट था। बैक बैक करता हूँ इसी में। माय बैड, यहाँ पे ही हमने कोई एक डिप्लॉयमेंट एग्जांपल खोला था, तो उससे आपको मतलब एक्चुअल समझ जाएगा कि मैं यूआरएल होगा और उसका रजिस्ट्री वहां पे मेंशन हो। ये एमएल बेसिक्स क्यों बता रहा है? हाँ, जैसे अभी ये देखो, इमेज देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, निक चेज, है ना, स्लैश। तो ये निक चेज क्या है, एक रजिस्ट्री होगा, कोई एक, राइट, एंड पॉइंट होगा, सर्विस होगा। हेलो, आई एम ऑडिबल गाइस? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड?
Hello everyone.